अस्सलाम वालेकुम जी। Organizational Psychology, and I'm your instructor, Humair Hashmi. In the past few lectures, we'd been talking about a relatively new topic related to organizational psychology, and that was the topic of positive psychology. हमने अभी तक ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में जो एक एलिमेंट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, उसका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पर क्या असर है। अभी तक हमने 4 चीज़ों का असर विद इन द रियल्म ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी देख चुके हैं हम। वी विल टेक ए लुक एट द 5th एलिमेंट within the overall larger framework of positive psychology that impacts organizational psychology, and that is self-efficacy. इससे पहले कि हम self-efficacy का जिक्र करें आपसे, let us review what we had done in the last lecture, that is lecture number 25. Can you recall what we talked about? Yes, we talked about emotional intelligence. Emotional intelligence is your capacity to be able to gauge your own emotions, to be able to gauge the emotions of other people around you, and to be able to use that information for the benefit of everybody concerned. That is what emotional intelligence is. And it has a great, important relationship with organizational psychology. हमने आपको ये भी बताया था, इस रिव्यू में बताता चलूँ आपको, that Daniel Goleman has identified at least 5 elements or dimensions of emotional intelligence. And what were those dimensions or elements? Number 1, self-awareness. Number 2, self-management. Number 3, self-motivation. Number 4, empathy. And number 5, social skills. You are absolutely right. These are, in the view of the psychologist whose name is associated with emotional intelligence, Daniel Goleman, these are the elements of emotional intelligence. हमने आपको ये भी बताया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है। हमने इस रेफरेंस में 5 चीज़ों का जिक्र किया था, और वो 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं? That emotional intelligence is closely related to success in job, that emotional intelligence is related to effectiveness at the place of work, that emotional intelligence is related to adoption to change within an organization, and that emotional intelligence is related to leadership, and that emotional intelligence is related to general success in life. ये 5 चीज़ें हमने कही थी जिनका ताल्लुक है इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। और आखिरी चीज़ जो हम पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड करना चाहेंगे वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी. लेट्स गो इनटू व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी first, and then see how self-efficacy is related to organizational psychology, and then see whether a person can help to improve his self-efficacy or not. First, what is self-efficacy? The concept has been developed by Albert Bandura, a North American, precisely a Canadian psychologist who has done an appreciable amount of work related to self-efficacy. Self-efficacy is defined as, or can be understood as, how well does a person think he can cope with a given situation. मैंने आपको कुछ अर्सा पहले एक मिसाल दी थी कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक ख़ातून है, वो अपनी सहेली की मेहंदी पर गई हैं और वो वहाँ से गाड़ी ड्राइव करके वापस अकेली घर जा रही हैं रात 11 बजे, एंड शी एनकाउंटर्स ए फ्लैट टायर. उनकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया.
एक खातून है, वो ये समझती हैं कि वो इस सिचुएशन से अच्छी तरह से एडिक्वेटली डील कर लेंगी. कैसे कि वो किसी को फ़ोन पे बता देंगी, या किसी राहगीर को रोक लेंगी, या किसी गाड़ी को रोक के कहेंगी प्लीज़ हेल्प मी चेंज माई फ्लैट टायर. और दूसरी खातून है जो हु वुड गेट फ्लस्टर्ड एंड हु डज नॉट नो व्हाट शी वुड डू इन अ सिचुएशन लाइक दैट. द फर्स्ट female, the first lady, is high in what Albert Bandura calls self-efficacy, and the other person, the second person who fails to recognize the fact how is she going to resolve this situation, this problem, is someone who lacks in self-efficacy. Self-efficacy is your knowledge, your capacity, your confidence, your ability to be able to deal with a given life situation adequately and to overcome the problems and hindrances in your life situations. That is how self-efficacy is defined. How would you consider yourself? Would you say that you are high in self-efficacy? Or would you say that you are not a person who is not very high in self-efficacy? Give this thing a thought and then see how can you possibly improve upon, increase your self-efficacy. Self-efficacy has two dimensions. We can talk about a general self-efficacy and a specific self-efficacy. General self-efficacy refers to two things. Number one, that the person feels, that the person knows that he can solve any given crisis or a major portion of crises that come into his life. And that it is more or less stable, that he has this knowledge that he can solve the problem of crisis whenever he is confronted or she is confronted with a problem or a situation or a hindrance. So this is general self-efficacy, where a person feels that he has this capacity to be able to solve life problems and situations given over a longer time period. We also talk about specific self-efficacy. A specific self-efficacy is specific to a task. For instance, the task is that you have to make a software which will help you to gauge how well you are performing in your exams, or help you to make out time for various subjects that you are going to offer for your bachelor's degree. And that software gives you the exact amount of time that you would require to give to each subject so that you could get an A in that subject. अगर आपको इस किस्म का कोई एक स्पेसिफिक टास्क दरपेश है और आप समझते हैं कि आप उस टास्क को अच्छी तरह से परफॉर्म कर लेंगे, तो this is an example of your having a high level of specific self-efficacy. You must have seen people who are good at certain things but not good at certain other things. When we in general terms say that such and such person is good at this but very bad at that, that is an example of his having a high self-efficacy in one aspect, which is the specific self-efficacy, and a low self-efficacy, low specific self-efficacy in another aspect. So psychologists talk about two types of self-efficacy: a general, where a person has the feeling that he can generally overcome life situations, resolve life problems, and a specific, where a person feels that if a specific problem arises, he would be able to solve it, but if that specific problem is different, he may not be able to solve it. We talk about two types of self-efficacy. Let us also compare self-efficacy with a number of factors so that we could further understand the concept. Self-efficacy must be distinguished from self-esteem. Self-esteem is one's evaluation of one's self. एक शख्स अपने आप को क्या समझता है, that is self-esteem. अगर उसका अपने बारे में अच्छा ख्याल है, so that would be an example of high self-esteem. If he thinks that he is not good, not that good a person as he would like to be, then that is an example of a relatively lower self-esteem.
Whereas self-efficacy is, a person might think that he is not a very well-read person, but he is very well trained in certain trade. And that is an example of a high level of specific self-efficacy. A person may have a relatively low self-esteem or mediocre self-esteem and may have a high self-efficacy, high specific self-efficacy. तो जहां सेल्फ एस्टीम जो है उसका ताल्लुक हमारी अपनी ज़ात की इवैल्यूएशन से है, सेल्फ एफिकेसी का ताल्लुक एक पर्टिकुलर टास्क से है. दूसरी चीज जो इससे मुतल्लिक हमने देखनी है, दैट इज व्हाट वी कॉल सेल्फ एफिकेसी रिलेटेड टू लोकस ऑफ कंट्रोल और एट्रीब्यूशन. लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी रिलेटेड टू लोकस ऑफ कंट्रोल एंड एट्रीब्यूशन. हमने आपको जब ऑप्टिमिज्म के बारे में गुजारिशात की थी तो आपको बताया था कि ऑप्टिमिस्ट्स वो लोग हैं जो कैसी एट्रीब्यूशंस करते हैं. यू आर राइट, हु मेक अनस्टेबल एंड स्पेसिफिक एंड टेम्पररी एट्रीब्यूशंस. रिमेंबर, जो ये समझते हैं कि जो हालात हैं वो बदलते हैं और बदलते चले जाएंगे, जो ये समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं ये किसी वक्त भी बदल सकते हैं. These are the kind of people who make temporary attributions. These are the kind of people who make specific attributions. हमने ये देखा है, हमसे मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात ने, कि सेल्फ एफिकेसी का एट्रीब्यूशन से एक ताल्लुक तो है, बट यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एफिकेसी, which is your ability or your knowledge that you can resolve a problem or deal with a situation, and kind of attributions that you make. You may be making optimistic attributions, but you may not have high self-efficacy. You may be making pessimistic attributions, and pessimistic attributions, you remember, are those attributions where a person feels that the problems that he is faced with would remain permanent, that the problem that he is facing are caused by his internal factors rather than external factors. Research shows and concepts related to self-efficacy show that self-efficacy is different from the attributions that a person makes. His attributions may be internal or external. That is a different issue. He is high on self-efficacy or low on self-efficacy remains related to the task at hand. Self-efficacy must also be distinguished from locus of control. Do you remember what is locus of control? आपको याद है कि जैसे योंग की सिस्टम में हम लोगों को दो तरह के लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स. इसी तरह से कुछ माहिरीन नफ्सियात ने हमें यह भी बताया है कि हम लोगों को या बनी नौ इंसान को दो किस्म के लोगों में तकसीम कर सकते हैं. Those who consider locus of control to be internal and those who consider the locus of control to be external. Those who feel that their life situations are self-created and those who feel that their life situations are created by circumstances around them. Those who consider that life situations around them their life situations are created by external factors are people who have external locus of control. And those people who feel that wherever they are in their life, whether they are a success or a failure in life, that is because they have themselves to blame or themselves to praise. These are the kind of people who have internal locus of control.
Now, locus of control must be distinguished from self-efficacy. Self-efficacy is one's ability or one's knowledge or one's confidence to be able to resolve a situation or a problem, and locus of control is the way one looks at the situation that one is in. So there are a number of factors that we are talking about in relation to self-efficacy. We have contrasted self-efficacy with self-esteem. We have contrasted self-efficacy with the kind of attributions that one makes, and we have contrasted self-efficacy with locus of control. Hopefully, now you understand what exactly is self-efficacy, separated from locus of control or attributions or self-esteem. Self-efficacy then is your capacity, your thinking that you can resolve a situation and solve a crisis. और अब देखते हैं कि self-efficacy का organizational psychology के साथ क्या ताल्लुक है. The impact of self-efficacy on organizational psychology can be seen from 5 different angles. और भी इसके एंगल हैं, लेकिन इसके 5 एंगल जो हैं वो बहुत अहम हैं. पहली बात सबसे जो अहम है इसमें वो है that self-efficacy is related to the choice behavior in an organization. The kind of profession that you select is related to, is dependent upon the level and the kind of self-efficacy that you have. A person who is good at verbal skills, who knows that he can express himself well, would choose a profession where verbal skills are required. Somebody who is high on computer or computing skills, he would select a profession in an organization where he has to work on computers or computer-related professions. He would not select a profession where he is expected to talk much. Somebody who is good at social skills, who considers himself high in terms of self-efficacy related to social skills, that specific self-efficacy related to social skills, he would choose a career where HRD, human resource development, is required, because that is exactly where social skills come into operations and play, and where he would be most efficient. So self-efficacy is related to the choice of profession that a person chooses in an organization. If there is lack of fit between one's self-efficacy and the kind of work that one does, अगर उसमें फिट नहीं है, अगर इन दोनों में मुताबिकत और ताल्लुक नहीं है, तो फिर वो शख्स वो प्रोफेशन चूज नहीं करेगा या उस प्रोफेशन में उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसा कि वो किसी और प्रोफेशन में कर सकेगा. इसलिए सेल्फ एफिकेसी का हमारे प्रोफेशनल चॉइस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है. पहली बात तो ये है हाउ सेल्फ एफिकेसी impacts our behavior in an organization. It impacts our behavior in terms of the profession that we select to perform in an organization. दूसरी बात जो सेल्फ एफिकेसी के साथ देखी गई है वो है इसका ताल्लुक मोटिवेशन के साथ. आपके ख्याल में क्या ताल्लुक होगा सेल्फ एफिकेसी का? सेल्फ एफिकेसी इज योर नॉलेज और योर कॉन्फिडेंस that you can resolve a problem, overcome a barrier, deal with certain situations and crises adequately. क्या ख्याल है आपका, क्या ताल्लुक होगा इसका आपकी मोटिवेशन लेवल के साथ अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो? You are absolutely right. The higher the self-efficacy, the higher would be the level of motivation in a person.
if he thinks that he has a high level of self-efficacy, that he can resolve situations, he can overcome crises, then he would be highly motivated. Conversely, those people who are low on self-efficacy are also low on motivation. So organizational motivation in organizational psychology is also related to self-efficacy. तीसरी चीज जो इससे मुतल्लिक देखी गई है, सेल्फ एफिकेसी का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पर क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्फ एफिकेसी एंड परसिवियरेंस. Perseverance means your ability to remain at a job, your ability to be resilient, to be consistent. कि आप तवातर से, तसलसल से काम करते चले जाएं. क्या ख्याल है आपका? Is self-efficacy, do you think, would self-efficacy be related to resilience and perseverance and consistency in one's job? बिल्कुल ठीक आपने अंदाजा लगाया. Absolutely right, that's the way it is, yes. The higher the self-efficacy, the higher the resilience, the consistency, the perseverance of a person at a job. अगर दो बंदे आपको ऐसे मिलें जिनकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं वो एक से हों, लेकिन उनमें से एक जो है उसमें सेल्फ एफिकेसी हाई हो और दूसरे में सेल्फ एफिकेसी लो हो, तो आप किस बंदे को रिकमेंड करेंगे फॉर promotion or employment? Obviously somebody who has higher level of self-efficacy, because he would be more resilient, resistant to disease, resistant to laziness. He would be resistant to not performing well. He would perform well, he would persevere. And that is why we say that self-efficacy impacts organizational behavior. We have also seen that self-efficacy impacts one's thoughts. हमारी self-efficacy का हमारी सोच से भी गहरा ताल्लुक है. वो लोग जिनमें self-efficacy ज़्यादा है, वो लोग अपने आप से खुशगवार बातें करते हैं. वो अपने जहन में खुशगवार ख्यालात और तसव्वुरात लाते हैं, और हम जानते हैं कि खुशगवार, अपने आप से खुशगवार बातें करने वाले और अपने आप से अपने जहन में खुशगवार ख्यालात और तसव्वुरात लाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैं. उनमें ज़हनी मसाइल और ज़हनी बीमारियां कम हैं. वो जिस्मानी बीमारियों से ज़्यादा महफूज रहते हैं as compared to other people. So what are we talking about? We are talking about the relationship between self-efficacy and our thoughts. Those people who are high on self-efficacy have positive thoughts, therefore are healthy, therefore persevere more, therefore have high motivation in organizations. चाहे वो organization school हो, या वो ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज हो, या अस्पताल हो, या जूते बनाने की, आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री हो, कपड़ा बनाने की मिल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, उसमें someone who has high SE or self-efficacy would be somebody who would be having more positive thoughts and therefore would be more motivated, would be more resilient, and would be more consistent in his or her job. And that is the relationship of self-efficacy with thoughts. Number 5, we have seen that self-efficacy is related to vulnerability with stress. Some people are more vulnerable to stress. Vulnerable means that they react to stress in a negative manner. They give in to stress. देखिए, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें स्ट्रेस एक लाजमी जुज है. कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसमें स्ट्रेस न हो. स्ट्रेस इज what prepares an organization to be competitive, to remain at a competitive edge. It raises people's
परफॉर्मेंस लेवल, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग just understand what stress is. Stress is a heightened state of emotionality. We know that people who are high on self-efficacy are less vulnerable to stress. They do not suffer. They do not bog down under the pressure of organizational stress. So, stress and one's ability to cope with stress, one's ability to be able to overcome stress, one's capacity to be able to get rid of one's stress, all of these factors are related to one's level of self-efficacy. Self-efficacy, conversely, is therefore related to your ability to cope better with stress. तो स्ट्रेस और का ये पांचवा ताल्लुक है जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में लोगों पे असरअंदाज होता है. अब अगर सेल्फ एफिकेसी इतनी अहम चीज है कि इसका बहुत गहरा असर है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से और हमारे प्रोफेशनल करियर से, तो हमें देखना चाहिए कि सेल्फ एफिकेसी के सोर्सेस क्या हैं. हाउ कैन आई बिकम मोर और हाई इन सेल्फ एफिकेसी? How can I advise people? How can I train people? How can I get people to become high on self-efficacy? In other words, what are the sources of self-efficacy? There are 4 factors that are identified which impact self-efficacy, which are the sources of self-efficacy. अगर इन चारों में से ज्यादा फैक्टर्स एक शख्स में हैं और हर फैक्टर ज्यादा मिकदार में उसमें पाया जा रहा है, तो वो शख्स हाई हो जाएगा सेल्फ एफिकेसी में. और अगर इन 4 फैक्टर्स में से जिनका मैं जिक्र करने वाला हूं आपसे, एक शख्स में ये फैक्टर्स कम पाए जाते हैं या कम मिकदार में पाए जाते हैं, तो उसकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो भी कम हो जाएगी. तो देखिए ये 4 फैक्टर्स जो हैं ये सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाते या घटाते हैं. एंड व्हाट आर दीज सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी? नंबर 1, मास्टरी एक्सपीरियंस, ए परफॉर्मेंस दैट लीड्स टू अटेनमेंट. मैं अपनी क्लासेस में अक्सर ये कहता हूं दैट इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू कंडक्ट रिसर्च, one of the most important way of learning to conduct research is to read about it and then to conduct it in actual practice. That gives you mastery experience over different steps that a person would take in conducting research. आप जानते हैं कि किसी को डॉक्टर बनने के लिए उसको ये सिखाया जाता है कि उसने कैसे ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करना है. बाय डाइसेक्टिंग ए ह्यूमन बॉडी, बाय लुकिंग एट वेरियस पार्ट्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ही और शी एक्वायर्स मास्टरी एक्सपीरियंस ओवर द टास्क, एंड दैट मास्टरी इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज of self-efficacy. अगर एक शख्स सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाना चाहता है तो performance is an important variable that will help to increase his self-efficacy. Factor number 1. Factor number 2 of self-efficacy, modeling. मैंने जैसे पहले आपसे ये कहा
कि मॉडलिंग हम जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी में और ख़ास तौर पर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, ये वो मॉडलिंग नहीं है जो हम टीवी के रेफरेंस में या कम्युनिकेशन के रेफरेंस में इस्तेमाल करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडलिंग in terms of looking at role models. If a person has people around him or her who are high on self-efficacy, then that person can adopt the behavior of the people that are around him. They would serve to be role models for him. And because they are high on self-efficacy, the person himself would also become high on self-efficacy. Imitating, emulating people who are high on self-efficacy makes a person also to become high on self-efficacy. अगर आप देखें कि दूसरा शख्स जो है वो बार बार कैसे काम कर रहा है और उस काम में कैसे वो कामयाब हो रहा है, तो ये एक रोल मॉडल जो है, ये परफॉर्मेंस जो है, इसके देखने से, इसको कॉपी करने से, इसकी तकलीद करने से आप खुद भी उस तरह के बन सकते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रोल मॉडलिंग और मॉडलिंग एज ए फैक्टर और एज ए सोर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी. रिसर्चेस में देखा गया है कि वो बच्चे या नौजवान जिनके वालिदैन या असातिज़ा खुद सेल्फ एफिकेसी में बुलंद हैं, वो बच्चे या नौजवान खुद भी सेल्फ एफिकेसी में बुलंद हो गए. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन और अपने एल्डर्स को अपना रोल मॉडल देखा, बनाया, समझा और उन रोल मॉडल की इमिटेशन में, तकलीद में, क्योंकि उनके रोल मॉडल्स भी जो थे वो हाई थे सेल्फ एफिकेसी में, इसलिए ये जब इन्होंने उनकी इमिटेशन की, उनकी तकलीद की, तो ऐसे बच्चे या नौजवान खुद भी सेल्फ एफिकेसी में हाई हो गए. सो रोल मॉडलिंग और इमिटेशन ऑफ people who are high on self-efficacy is another source of self-efficacy. तीसरा सोर्स जो है सेल्फ एफिकेसी का वो है सोशल परसुएशन. अगर आपके गिरदो नवाह के लोग जो हैं, अगर आपका पीयर ग्रुप जो है, अगर आपके वालिदैन, आपके सिबलिंग्स, आपके असातिज़ा, आपका मीडिया, आपके अखबारात, आपका टेलीविजन, आपकी किताबें, आपके रसाइल, ये तमाम चीजें मिलकर अगर आपको इस बात की तरफ मायल कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ एफिकेसी में बढ़ना चाहिए, तो फिर इस बात का इम्कान है कि वो शख्स भी सेल्फ एफिकेसी में बढ़ता चला जाएगा. सोशल परसुएशन देयरफॉर इज अनदर फैक्टर दैट impacts, that increases, that is a source of self-efficacy. वो बच्चे या वो नौजवान जिनके रोल मॉडल्स सेल्फ एफिकेसी में हाई हैं, और वो बच्चे या वो नौजवान जिनके गिरदो नवाह के लोग जो हैं, जिनमें उनका उठना बैठना है, जो उनका पीयर ग्रुप है, जो जिनके साथ वो खेलते कूदते हैं, जिनके साथ वो नोट्स एक्सचेंज करते हैं, जिनके साथ वो पिकनिक्स पे जाते हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, और शॉपिंग ट्रिप्स पे जाते हैं, ये लोग अगर हैं हाई और ये उनको इस बात की तरफ मजबूर करेंगे कि दूसरा शख्स जो है वो भी सेल्फ एफिकेसी में हाई हो जाए, सो दैट वुड बिकम another source of higher levels of self-efficacy. Social persuasion. That is the third factor of self-efficacy. The fourth factor and the final factor of self-efficacy is what we call physical or psychological arousal. अगर एक शख्स सुबह उठे और आप उससे कहें कि वो जागने के फौरन बाद 5 मिनट के अंदर अंदर
100 मीटर्स दौड़ना शुरू कर दे और उसका टाइम जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो ऐसा करे? नहीं, क्योंकि he is not physically aroused yet. He has not come out of his sleep pattern. It would take him some time, let us say 10 or 15 minutes. He needs to stretch his limbs. He needs to fill his lungs with oxygen. He needs to get his blood pressure raised. He needs to have a focused attention. He needs to psychologically arouse himself to be able to cover that distance at a rapid pace. This is what is meant by a physical and psychological arousal. Physical and psychological arousal is the fourth factor in self-efficacy. If a person is not physically or psychologically in a state of arousal, his self-efficacy would remain low. इसीलिए हम जब कोई काम करने को कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे कहते हैं कि आप तैयारी करके आइएगा, आप तैयार हो के आइएगा. What does it mean? तैयारी करके आइए या तैयार हो के आइए? It means that you should bring yourself in a physical and psychological state of heightened arousal. Heightened arousal helps to perform better, and that is how it impacts self-efficacy. These are the four factors that contribute towards making a person higher in self-efficacy. What are those factors? 1, mastery, experience or performance leading to attainment or achievement. 2, looking at, imitating people who are good role models, who have high self-efficacy in themselves. Number 3, social persuasion, लोगों का आपको कहना कि आप करें. And number 4, physical and psychological arousal. These are the 4 factors that we have identified as sources of self-efficacy. ये जो बातें हमने की हैं, इनका क्या ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के साथ? ये तो हमने देख लिया कि इस बिना पे सेल्फ एफिकेसी जो है वो बढ़ती है. लेट अस टेक ए लुक एट दिस सेल्फ एफिकेसी and its implication with the workplace in organizations. In that context, a number of things need to be mentioned for you. Very interesting things. Number 1, research has shown that people who are high on self-efficacy show better performance at their jobs to the tune of about 28 to 30%. यूं समझ लीजिए कि अगर नॉर्मल एवरेज लोग 100 गज कपड़ा बनाते हैं, तो वो लोग जो सेल्फ एफिकेसी में हाई हैं वो तकरीबन 128 गज कपड़ा बनाते हैं. वो लोग जो 100 जूतों के पैकेट पैक कर सकते हैं, अगर वही लोग सेल्फ एफिकेसी में हाई हों, तो वही लोग सेल्फ एफिकेसी में हाई होने की वजह से 128 जूतों के पैकेट पैक कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, सेल्फ एफिकेसी हैज शोन टू बी रिलेटेड टू an increase of 28% higher performance than those people who are used as controls. इतना फर्क है. तकरीबन 1/3 आपकी या एक शख्स की प्रोडक्टिविटी एक ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाती है सेल्फ एफिकेसी के बढ़ने की वजह से. 28% इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में हायर सेल्फ एफिकेसी की वजह से देखा गया है. दूसरी बात जो देखी गई है इस रेफरेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में, वो है कि सेल्फ एफिकेसी वाले लोग जो हैं वो
HRD में ज्यादा एम्प्लॉय किए जा रहे हैं और वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं. आप जानते हैं HRD refers to Human Resource Development. What do you think is the biggest resource in an organization? The material or the human? Obviously, human resource is much more valuable than material resource in an organization. Research shows that people who are higher on self-efficacy are better at HRD practices. Therefore, HRD people are hiring more and more people who are more on SE, self-efficacy. एक और चीज जो देखी गई है वो ये है कि सेल्फ एफिकेसी का ट्रेनिंग के साथ, तरबियत के साथ गहरा ताल्लुक है. सच दैट ट्रेनिंग कैन इम्प्रूव ए पर्सन सेल्फ एफिकेसी. अब हमारे बहुत से रेजिमेंट्स ऐसे बन चुके हैं, हमारे से मेरी मुराद माहिरीन नफ्सियात के, उन्होंने ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं, ऐसे रेजिमेंट्स बना लिए हैं जिनके जरिए लोगों की सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाया जा सकता है और वो उनको बढ़ा रहे हैं. ये ना समझिए कि सेल्फ एफिकेसी जो है ये एक दफा फितरत की तरफ से अगर मिल गई तो फिर वो वहीं रह गई. नहीं, ऐसी बात नहीं है. Psychologists have developed technologies which increase through training self-efficacy levels of people. एक और चीज जो इसके साथ देखी गई है सेल्फ एफिकेसी की वर्क प्लेस में वो ये है दैट सेल्फ एफिकेसी, एन इंक्रीज इन सेल्फ एफिकेसी कैन डिक्रीज स्ट्रेस इन अ पर्सन. दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग in managers, in supervisors, in people related to organizations can be done by increasing the self-efficacy of a person, such that when people are trained to become higher in self-efficacy, they also become better in managing their stress. When they manage their stress better, because they have increased in their self-efficacy, their self-management becomes better, their productivity becomes better, their job satisfaction becomes better, their mental and physical health becomes better. You see the connection between all of these elements in the psychology of human beings? That is how self-efficacy impacts organizational behavior and organizational psychology. Research has also shown that when people are trained in self-efficacy, that training increases their self-efficacy, and that training also leads to better leadership. So what are psychologists doing? They are training people to improve self-efficacy, and because their self-efficacy becomes improved, their leadership capacities and their leadership roles become better. अभी हमने देखा कि उनकी मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, लोगों की मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन becomes better because they get training in self-efficacy. अब हम ये भी देख रहे हैं that self-efficacy training improves people's leadership styles and leadership performance. एक और चीज जो देखी गई है वो है self-efficacy is related to self-managed teams. अब इससे क्या मुराद है? थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं इससे मुतल्लिक. ऑर्गेनाइजेशंस में एक नया ट्रेंड जो है, जो 70s और 80s में अब बढ़ना शुरू हुआ है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ टीम्स इन ऑर्गेनाइजेशंस. वो टीम्स जो हैं वो मैनेजमेंट बनाती है इन रिलेशनशिप टू सर्टन प्रॉब्लम्स और सर्टन स्पेसिफिक टास्क्स.
मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है कि उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनानी है. मैनेजमेंट gets hold of a number of people and produces a team in the organization, and that team then produces that advertising campaign. That is an example of a team where management selects people of various capacities and puts them together to perform a certain task. कुछ teams ऐसी भी होती हैं which are called self-managed teams, जो खुद voluntarily organizations में कहते हैं कि we can resolve this problem or we can do this thing which will be benefit for the organization. Those teams are not made by the management, but those teams are voluntary teams, and that is why they are called self-managed teams. Research shows that high level of self-efficacy is related to self-managed teams, such that self-managed teams consist of people who have higher level of self-efficacy, and if self-managed teams are trained, then their level of efficiency would increase, and therefore the general productivity of the self-managed team would further increase. The relationship between efficiency and self-managed teams, therefore, is a positive relationship. What have we seen so far? We have seen that self-efficacy is a concept that was introduced to positive psychology, and that self-efficacy is a general and self-efficacy is a specific to tasks. We have seen various sources of self-efficacy, and we have seen that self-efficacy in various ways impact behavior of people in an organization. That else, self-efficacy is closely related to organizational psychology. Before I finish today, let me review for you of what we have done in terms of positive psychology. We talked about 5 elements in positive psychology in the last few lectures. We talked about optimism, we talked about hope, then we talked about emotional intelligence, then we talked about subjective well-being, what we call happiness, and then finally we talked about self-efficacy. ये 5 चीजें जो हैं ये मिलके पॉजिटिव साइकोलॉजी का हिस्सा हैं. हमने देखा कि ऑप्टिमिज्म का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से गहरा ताल्लुक है. हमने देखा होप का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से गहरा ताल्लुक है. हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि एक नया सब्जेक्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, उसका बहुत गहरा असर है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के साथ. फिर हमने ये भी देखा कि SWB, जिसको हम रोज़मर्रा की ज़ुबान में खुशी या हैप्पीनेस कह सकते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है. और फिर हमने देखा कि सेल्फ एफिकेसी, your knowledge, your confidence that you can resolve situations and problems in an organization, उसका भी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से ताल्लुक है. ये 5 चीज़ें मिलके पॉजिटिव साइकोलॉजी बनती है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के साथ बहुत गहरा असर है. आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हासिल कीजिए. ये नई डेवलपिंग फील्ड है और इसका आपको बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल लगेगा, और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के साथ. Until the next time, Khuda Hafiz, God be with you.